Good morning, students. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are fine at your places. So today in your maths class, we are going to revise the exercise 8.2 from your maths textbook. The name of the chapter, that is chapter number 8, factors and multiples. From that chapter we are going to revise the exercise 8.2 because few kids requested to revise the exercise 8.2. So I am going to solve the question number 4. Question number 4, subpart C. Today I am going to solve question number 4, subpart C. So this question number 4, subpart C is 1/4 of 20. We have to find what is the 1/4 of 20. This fractional number 1/4 is called 1/4 of 20. So here we have to find the value of 1/4 of 20. So 1/4 of 20 means we have to multiply whole number 20 by fractional number 1/4. 1/4. So here we have to multiply the whole number, that is यहाँ पे whole number क्या है 20. We have to multiply this whole number 20 by the fractional number 1/4. Then we will get the 1/4 of 20. So start solving. 1/4 of 20 is equal to 1/4 multiplied by 20. 1/4 into 20. So when you multiply a fractional number by the whole number, that time the whole number is written in the numerator and in the denominator we write 1, है ना. So 1/4 into 20 को fractional way में represent करो. पहले 1/4 into 20 को fractional way में कैसे represent करेंगे? numerator में 20 लिखेंगे, फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1. 1/4 into 20/1. Now in multiplication you have to multiply numerator with the numerator and denominator with the denominator. So 20 into 1 numerator में आएगा, denominator में क्या आएगा 4 into 1. So 1 into 20 numerator में by 4 into 1. So 1 into 20 will give you answer 20/4. ठीक है, 20/4 लिखा. So I've told you in the fractional numbers numerator and denominator are separated by this line, and this line is represented as division sign. This line is nothing but the division. So 20/4 means you have to divide the numerator by denominator. 20 divided by 4. So when you divide the 20/4 we get the answer equal to 5 because 4 5s are 20. So 1/4 of 20, 1/4 of 20 is equal to 5. Similar way I am going to solve the D, subpart D of your question 4. 1/4 of 28, 1/4 of rupees 28. So 1/4 of rupees 28, that means we have to multiply the whole number, this 28 is the whole number, by the fractional number 1/4. हमको 28 को किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रैक्शनल नंबर 1/4 से मल्टीप्लाई करना है. तो शुरू करो. 1/4 इंटू 28. नाउ देखो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो फ्रैक्शनल नंबर और होल नंबर एक साथ, तो आपको होल नंबर को पहले फ्रैक्शनल वे में रिप्रेजेंट करो. सो वाइल रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शनल नंबर इनटू द while representing the whole number into the fractional number, what we have to do? whole number will be in the numerator. जो 28 है वो न्यूमरेटर में आएगा and denominator will be equal to 1. So 20/1 आएगा. इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा नंबर 28 का? 28/1. So multiply 1/4 into 28/1. Now multiply numerator with the numerator and denominators with the denominators. So 1 into 28 by 4 into 1. So 1 into 28 will be 28 and 4 into 1 will be 4. So 28/4. So I have told you this line indicates the division sign. That means we have to divide the numerator by the denominator. Numerator को किससे डिवाइड करना है? Denominator से. 28 divided by 4. So when you divide 28/4, the answer is 7.
So 1/4 of rupees 28 is equal to rupees 7. Don't forget to write the unit. Rupees है ना ये, rupees 28, that's where rupees 7 आएगा. I hope you have understood now how to find 1/4 of 28 or any whole number multiplied by any fractional number, how you supposed to do the multiplication. Next, E part. 1/2 of 34 kg. Here we have to find 1/2 of 34 kg. That means we have to multiply whole number 34. यहाँ पे जो whole number है 34, we have to multiply this whole number 34 by 1/2 और 1/2. 1/2 से multiply करना है 34 को. So start. 1/2 of 34 kg is equal to 1/2 into 34. So again, when you multiply the whole number with the fractional number, you have to represent the whole number into the fractional number. आपको ये whole number को किस में represent करना है पहले? फ्रैक्शनल नंबर में. तो फ्रैक्शनल नंबर में जब आप होल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो जो ये होल नंबर है 34, दैट यू विल राइट इन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? 34. और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर में वी विल राइट 1. सो 1/2 इंटू 34/1. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स विद द न्यूमरेटर, denominators with the denominators. So 1 into 34/2 into 1. 1 into 34 will give you 34, by 2 into 1 will give you 2. 34/2. So I have told you 34/2 means we have to divide numerator 34/2. हमें 34 को किससे डिवाइड करना है? 2 से. 34 divided by 2. Whenever you divide 34/2, the answer is 17. 17 2s are 34. So 1/2 of 34 kg is equal to 17 kg. Don't forget to mention the unit in the answer. 1/2 of 34 kg is equal to 17 kg. Now next part. Question number 5. I have solved the question number 4 subpart C, D, E. Now question number 5, it's the word problems based on the fractional numbers. So if 1 kg apples cost rupees 50, how much will 1/2 kg cost? So this is the word problem. So always remember, while solving the word problem you have to write the data given. जो भी डाटा दिया है वो पहले वर्ड्स में लिखो. सो क्या दिया है 1 kg apples cost is equal to 50. So 50 क्या है? The cost of 1 kg apples. Cost of 1 kg apples is equal to rupees 50. And what they have asked us to find? They have asked us to find the cost of 1/2 kg apples. So cost of 1/2 kg apples is equal to question mark, because this we have to find out. Now start. Cost of 1/2 kg apples means we know the cost of 1 kg apple. Cost of 1 kg apple is equal to 50. Cost of 1/2 kg apples means we have to find 1/2 of rupees 50 or half of rupees 50. So half of rupees 50 means we have to multiply rupees 50 by half. हमें rupees 50 को किससे multiply करना है? हाफ से. So 1/2 into 50. Again इसको 50 को फ्रैक्शनल वे में रिप्रेजेंट करो. 1/2 इंटू 50/1 और मल्टीप्लाई शुरू करो, मल्टीप्लिकेशन शुरू करो. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 1 into 50/2 into 1. सो आंसर विल बी 50/2. And 50/2 means we have to divide numerator 50 by the denominator 2. So 50 divided by 2. When you divide the 50 by 2, answer will be 25. If you don't know the answer, if you can't calculate it orally, you have to do it in the rough. Rough में division कर लो. 50 divided by 2. So 2 2s are 4. क्वोशंट में 2 जाएगा. 5 माइनस क्या आएगा? 4. 5 minus 4 will give you 1. Now the next digit is over here 0. So put 0 over here after 1. The number is 10. Now you have to divide 10 by 2. So 2 की टेबल में 10 आता है क्या? Yes. 2 5s are 10. So write 5 in the quotient. Minus
10. 10 minus 10, remainder is 0. So what is your quotient? 25. This will be the answer after division. So 50 divided by 2 will give you the answer 25. So what is this 25? It is the cost of half kg apple. Cost of half kg apples is equal to rupees 25. Don't forget to mention the unit. Next question, question number 8. If 1 kg carrots cost rupees 16, how much will 3/4 kg cost? So they are asking कि अगर 1 kg कैरेट की कॉस्ट 16 रुपीज़ है तो 3/4 kg कैरेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो पहले इन वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू राइट द डाटा गिवन. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज़ 16. ये 16 क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स. सो राइट इट डाउन इन द वर्ड्स. कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 16. नेक्स्ट इज we have to find the cost of 3/4 kg carrots. So cost of 3/4 kg carrots is equal to question mark. And after that start solving. Cost of 3/4 kg carrots means we have to find out the 3/4 of rupees 16. 3/4 kg carrots मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? 3/4 of rupees 16 फाइंड आउट करना, बिकॉज 1 kg की कॉस्ट कितनी थी? 16 रुपीज़. सो 3/4 kg कैरेट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 3/4 ऑफ रुपीज़ 16. सो 3/4 इंटू 16. अगेन कन्वर्ट द होल नंबर इंटू फ्रैक्शनल नंबर एंड देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स विद द न्यूमरेटर्स. आंसर विल बी 3 into 16 by 4 into 1. After multiplication 16 3s are 48. 48 will be in the numerator. 48 by 4. 48 by 4 means 48 divided by 4. So when you divide 48 by 4, the answer is 12. That means the cost of 3/4 kg carrots is rupees 12. क्या ही cost? Cost of 3/4 kg carrots is rupees 12. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट. यहाँ पे ये जो कॉस्ट ऑफ 3/4 kg कैरेट्स है वो किस में लिखना है? यूनिट में, रुपीज़ में. रुपीज़ विल बी द यूनिट. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है? अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़. सो क्वेश्चन नंबर 10 का आई एम गोइंग टू सॉल्व द बी पार्ट. 1/2 of 1 liter. We have to find 1/2 of 1 liter. So to find 1/2 of 1 liter, पहले तो you have to convert 1 liter into milliliter. पहले 1 liter को milliliter में convert करो. So 1 liter is equal to how many milliliter? 1 liter is equal to 1000 milliliter, है ना? So 1/2 of 1 liter is equal to 1/2 of 1000 milliliter. हमें जो ये 1 liter है इसको रिप्लेस करो 1000 मिलीलीटर से. सो 1/2 ऑफ 1 लीटर को रिप्लेस किया मिलीलीटर से. 1/2 ऑफ 1000 मिलीलीटर. तो 1/2 ऑफ किसका ढूंढेंगे अभी हम? फाइनली 1000 मिलीलीटर का 1/2 ढूंढेंगे. 1/2 ऑफ 1000 मिलीलीटर. सो 1/2 ऑफ 1000 मिलीलीटर मतलब हमको 1000 मिलीलीटर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 1/2 इंटू 1000. 1/2 इंटू 1000. अगेन convert this whole number 1000 into the fractional number. So 1 into 1000 by 2. So 1 into 1000 will give you answer after multiplication equal to 1000 and denominator will be 2. 1000 by 2. 1000 by 2 means 1000 divided by 2. So when you divide 1000 by 2 you get answer equal to 500. You can do the rough calculations over here. 1000 divided by 2. So 2 5s are 10. 10 minus 10, remainder will be 0. Next digit is 0. 0. So 2 into 0. यहाँ पे फिर से आएगा 0. 0 minus 0, रिमाइंडर इज 0. नेक्स्ट डिजिट इज़ अगेन 0. तो यहाँ पे फिर से क्वोशंट में 0 आएगा, है ना. एंड 0 minus 0 विल गिव यू 0.
like this 1000 divided by 2 will give you 500. So 1/2 of 1 liter is equal to how much? 500 ml. ये ml होगा, मिलीलीटर होगा, लीटर नहीं होगा, क्योंकि हमने 1/2 of 1000 मिलीलीटर ढूंढना शुरू किया था. ये किसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है? 1000 मिलीलीटर को. दैट्स वाई इन द एंड वी विल गिव दी यूनिट मिलीलीटर. लीटर नहीं देंगे, यूनिट मिलीलीटर देंगे. 1/2 of 1 liter is equal to 500 milliliter. Now next question, sub part of question number 10, that is C. Sub part is C. I am going to solve C. 3/4 of 1 meter. 3/4 of 1 meter we have to find. First of all, convert this 1 meter into centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. कितना होता है 1 मीटर? कितने सेंटीमीटर आते हैं 1 मीटर में? In 1 meter there are 100 centimeters. So 3/4 of 1 meter is equal to 3/4 of 100 centimeter. We have to replace this 1 meter by the 100 centimeter. 1 meter को 100 centimeter से replace करो. So 3/4 of 100 centimeter. 3/4 of 100 centimeter means we have to multiply the 100 centimeter by 3/4. So 3/4 into 100. क्या आएगा? 3/4 इंटू 100. मैंने बताया आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में, और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 3 इंटू 100, 4 इंटू 1. लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते 4 इंटू 1, क्योंकि 4 इंटू 1 हमें पता है 4 ही आने वाला है. सो 3 इंटू 100 विल गिव यू आंसर 300 इन द न्यूमरेटर बाय 4. सो 300 बाय 4 मीन्स वी हैव टू डिवाइड 300 बाय 4. 300 को 4 से डिवाइड करना है. व्हेन यू डिवाइड 300 बाय 4, रफ में कैलकुलेशंस कर लो. 300 को 4 से डिवाइड करके देख लो. आंसर इज गोइंग टू कम 75. सो 3/4 ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है यूनिट, मीटर नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड मीटर इनटू सेंटीमीटर एंड देन वी स्टार्टेड फाइंडिंग दी 3/4 of 100 सेंटीमीटर. दैट्स वाई फाइनली आंसर जो आएगा उसको हम सेंटीमीटर यूनिट देंगे. 3/4 of 1 meter is equal to 75 centimeter. This will be your final answer. I hope you have understood exercise 8.2 nicely. Still, if you have any doubts, you can ask me or you can reach to me anytime. Till then, thank you. Have a good day.